Okay, dear students, welcome back to class. लास्ट लेसन में हमने पार्ट 1 पढ़ा था नेकलेस का ही. नेकलेस एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका नाम नेकलेस क्यों पड़ा. आपने वो जाना होगा कि मटिल्डा का जब कैरेक्टर आप पढ़ते हैं कि नेकलेस इसका नाम क्यों पड़ा. Why the lesson has been named, or short story has been named as necklace. Today it is part 2 of the lesson. सबक पढ़ने से पहले here are some words which you have to remember. Large, small brown birds. It is CHIC, chic. Fashionable, closet, small room for costly things. जैसे घर में कोई तिजोरी वगैरह होती है जिसमें सोना, दूसरे जवाहरात ये रखा जाता है. सैलून्स, शॉप्स फॉर ब्यूटी और फैशन. ब्यूटी और फैशन, जैसे ब्यूटी पार्लर होते हैं, ब्यूटी और फैशन. रैप्स, कवरिंग्स, जैसे वो सोने की जितनी भी चीजें होते हैं उनके जो बाहर जिसमें वो रखे जाते हैं उनको रैप्स कहते हैं. कैब, ए टैक्सी. रीयूज, हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्शन. अजरूर्स, ये वो आपने किस में पढ़ा है लेसन में. पहला जो एक लेसन था मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहां अजर शेलॉक था. अजरूर्स, मनी लेंडर्स, ओडियस, extremely unpleasant, haggling, attempting to decide. ये इसमें खरीद फरोख्त के बारे में है, कौन सा मैं खरीदूं, क्या करूं, जो इसमें मदद करता है. So a very small amount of money, रेजगारी, छोटे छोटे पैसे. Array, AWRY, array, not in the intended way, जब इरादा नहीं होता है, कुछ टाल मटोल सी हालत. पेन, बॉकेट. हमने मैडम मैटिल्डा को अपनी फ्रेंड, पिछले लेसन में हमने अपनी फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर के पास छोड़ा था. उसने ज्वेलर्स की वो पूरे उसके एक केस एक रखा, उसके सामने आप चॉइस कर लो कौन सा लेना है. She was at first she saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. इसने देखा शीशे के आगे जाकर मुझे कौन जचता है पसंद, तो लेकिन फैसला नहीं कर सकी. मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती थी, ले भी नहीं सकती थी. ले लूं तो ये बताएगी कि ये क्या है, ये ज्यादा कीमती है. छोड़ूं तो मैं कहां से लाऊंगी फिर. वाई, यस, लुक फॉर योरसेल्फ. आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू. सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टैम्प बॉक्स a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took out it. जब उसने वो बाहर निकाला उसके हाथ थरथराने लगे. ये वो चमक रहा था बहुत, उसमें बहुत सारे डायमंड लगे हुए थे. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice. अब वो थोड़ा हिचकिचाहट उसके अंदर, उसको ज्वेल को देखकर, उस नेकलेस को देखकर उसको वो थोड़ी हिचकिचाहट पैदा हुई कि मैं क्या बताऊँ, इतना इसकी कीमत क्या होगी, मैं किस तरीके से इसको खरीद लूँ. फुल ऑफ एंजाइटी, बहुत परेशान. कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या आप मुझे ये दे सकती है. मैं फ्रॉस्टियर को बताया, मैटर डालने कि आप मुझे ये दे सकती है. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure. बाकी चली गई. हाँ, तो उसने बताया कि आप ले सकती है.
The day of the ball, Arrow Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब प्रेजेंटेशन देनी है डांस की प्रेजेंटेशन के लिए भी इसको मैटिल्डा को ही मैटिल्डा बहुत जो प्रति थी बहुत खूबसूरत थी अब इसको सिलेक्ट किया कि आप प्रेजेंटेशन दे सकती है. She danced with enthusiasm, with the pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अब इसकी जो जिंदगी की मकसद थी वो पूरी हुई. ड्रेस भी अच्छा था और ये ज्वेल भी इसका बहुत अच्छा था. लोगों ने भी शाबाशी की, लोगों ने भी तारीफ की, लोगों की नजरों में भी ये बहुत प्रति थी. अब इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था. She went home around 4 o'clock in the. She went home around 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. दो इसके साथ और भी 3 साथी थे और इसका जो हस्बैंड था, हस्बैंड भी एक शॉप में बैठा हुआ था, आधी सी नींद में था, नींद उसको बहुत आई थी. He threw around her shoulders the modest wraps that they had cried, whose poverty clashed with the elegance of the ball's costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a call. Loisel ने इसको ठहराया कि आप ठहरो कि मैं एक बुलाती हूँ, एक टैक्सी को बुलाती हूँ. I am going to call a call. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Hailing the coachman whom they saw a distance, they walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in the Paris after nightfall. इन्हें रात के बाद ये इसमें जो गाड़ी कोई मिलती है, कोई गरीब ही होगा जिसको दिन में सवारी नहीं मिलती है, रात के बाद उसको गाड़ी मिली. उसी गाड़ी में वो फिर अपने घर वो चलने के लिए तैयार हुए. It took them as far as their door and they went verily up to the apartment. It was all over for her and on his part. He remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. उसको याद था कि इसका जो हस्बैंड था उसको याद था मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना चाहिए, इसलिए वो जल्दी सो गया. She removed the wrappers from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब इसने देखा कि नेकलेस जो मैंने लाया था वो इसकी गर्दन में नहीं था, उसकी गर्दन नेकलेस से खाली थी, पता नहीं वो कहीं गिर गया था. Loisel already had half undressed and asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. "I have no longer Ma'am Frost's necklace. मेरे पास Ma'am Frost का नेकलेस नहीं है, वो मैंने खो दिया. He arose in dismay. How is it that it is not possible? And they looked in the folds of dress, in the folds of cloth, in the pockets, everywhere. They could not find it. अब हर जगह उसकी तलाश की. अब उनकी मुसीबत मानो शुरू हो गई. थोड़ी देर की खुशी की वजह से बहुत सालों की मुसीबत की बुनियाद लग गई. He asked,
You are sure you still have it when we left the minister's house? क्या आपको यकीन है कि जो आपके घर में लगाया हुआ था जब हम मिनिस्टर के हाउस से निकले? Yes, I felt it was we came out. मैंने जब हम वहां से आई तो मैंने महसूस किया कि मेरे गर्दन पे है. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. They looked at each other utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. अब उसे दोबारा कपड़े लगाए. I am going, he said, over the track where we went on the foot, so to see if I can find it. And he went. She remembered in her evening gown. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspapers offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment before the frightful disaster, before this frightful disaster. अब उसको पता है कि फ्राइट खौफनाक मुसीबत उनको आन पहुंची थी. क्यों? इनके they were not having that much amount to purchase a new necklace. अब नया खरीदने के लिए इन बेचारों के पास पैसे नहीं थी. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will be have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. अब उसने एक खत लिखा इस फ्रॉस्टर को, मैडम फ्रॉस्टर को खत लिखा, एक लेटर लिखी कि हम जो ज्वेल हमने लाया था उसका कुछ थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हुई है, टूटा है, तो आप उसको रिपेयर कराने के बाद हम आपको वापस भेजेंगे. Ma'am Foster did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. What would she think of if she should receive the substitution? What should she say? Would she ask her for a robber? वो क्या बताएगी? जब वो ज्वेल जहाँ से ले जाएंगे, जब वो बॉक्स देखेगी, क्या वो अपने ज्वेल जो उसका हमने लाया था उसको नहीं पहचानेगी? वो पहचानेगी, बताएगी कोई दूसरा है. Ma'am Loisel now knew the horrible life of the necessity. She did her part. However, completely horribly it was necessary to pay this frightful debt. अब खौफनाक जो कर्जा था ये चुकाना था, कुछ न कुछ करना ही था, उसके बगैर कोई चारा नहीं था. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. अब अपना जो अपार्टमेंट है वो छोड़ दिया. अपनी नौकरानी जो थी उसको भी रुखसत की, छुट्टी की, उसकी नौकरी गई. अब उनके पास नौकर रखने के लिए कोई पैसा नहीं था. एटेक हम कहते हैं कि मकान के ऊपर जो जहां छत के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है वहां रहने के लिए उन्होंने अपना वही कुछ लिया, तो बाकी किराया पर दे दिया. उन्होंने बहुत इसके बाद देने. The husband worked evening, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 souls a page. अब वो पेज लिखता था, मतलब कोई किताब लिखनी थी, कुछ काम करना था. 5 souls, यानी हम पता है कि 5 पैसे एक पेज की. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. ये 10 साल के बाद, एक थोड़ी सी लम्हे की खुशी की वजह से उनको पूरे 10 साल तक ये तकलीफ उठानी पड़ी. Ma'am Loisel seemed
seemed old now. She had become a young, strong, hard woman, the crude woman of the poor husband, her hair badly dressed, her skirts airy, her hands red. She spoke in a loud tune and washed the floors with large pails of water, but sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was a beautiful and she flattered. अब इसने बहुत ही मेहनत की, लॉइजर ये जो मेटिल्डा थी, मेटिल्डा ने बहुत ही मेहनत की और खुद तमाम घर के जो पूरे काम थे वो उसने किए, पूरे पैसे जमा किए, पूरे पैसे जमा करने के बाद उन्होंने वो खरीदा, मतलब नया उन्होंने वो खरीदा। तो लेकिन बात ये हुई कि जब उन्होंने खरीदे के बाद जब मैम फास्टर के पास वो ले गए वही नेकलेस, तो वो नेकलेस जो वो ले गए असली था, उसकी जगह जो उन्होंने वहां से लाया था वो नकली था। दैट वाज नॉट ए रियल वन, दैट वाज ए फॉल्स वन। तो लेकिन इन्हें एक यहाँ पे एक सबक हमें मिलता है कि थोड़ी है, एक तो हमें हर एक काम जो है सोच समझ के करना चाहिए। कोई चीज़ खरीदनी हो तो ये देखना चाहिए असली है या नकली है, कहीं हम असली की जगह नकली चीज़ हासिल न करें और बाद में हमें पछताना पड़े। तो लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ कि ये पहले जो ऐश पसंद थी, ऐश पसंद के बजाय ये अब बहुत हार्ड बन गई, खुद अपने हाथ से हर काम करने लगी। तो इसका यही कैरेक्टर हमें याद रखना है कि पहले ही कहाँ से, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, शादी कैसे हुई, शादी के बाद क्या हुआ, आफ्टर मैरिज पार्टी में क्या हुआ, जो नेकलेस का क्या मामला हुआ। तो ये इसका कैरेक्टर इस तरीके से बनाएंगे और टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन मेहनत कीजिएगा। हाँ, इसका ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि जो जो वीडियोस अपलोड हो तो उनको वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो लेकिन वक्त का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।